edition organized by APAC News Network, and we're also thankful to the Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, for being the host partner and supporting partners, Uttar Pradesh Jal Nigam, Lucknow Smart City Limited as well. This is the second edition of this Sustainability Conclave. The first edition we did in Maharashtra. This is the second edition of this Urban Sustainability Conclave, and we're glad that we have come to the city of Lucknow in the state of Uttar Pradesh. And for the inaugural session, the theme is that transforming urban landscape by leveraging sustainable technology and innovation. The focus of this event will be primarily on technology and sustainable innovation for three sectors in the urban ecosystem, that is water, energy, infrastructure, and obviously healthcare as well. So we are focusing on these four aspects of sustainability, especially focusing on the state of Uttar Pradesh, and we are also joined by some speakers from some other state governments as well. So without taking much time, I would like to invite on stage the chief guest of this conference, Durga Shankar Mishra, Chief Secretary of Uttar Pradesh, to come on stage. Please, a huge round of applause for him. Let me invite G. Ashok Kumar, Director General, National Mission for Clean Ganga, Minister of Jal Shakti, Government of India, who will be the keynote speaker for the inaugural session. We'll be joined by Mr. Venkat Garimera, Vice President Sustainability for Schneider Electric. I think he's here only, will be joining us shortly. I request Sangamita Mohanty, co-founder of APAC News Network, to officially welcome our esteemed guests for the inaugural session. Can we have the planters on stage, please? Sri Durga Shankar Mishra, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, the chief guest of this conference, who has been a guide and mentor with APAC News Network for many years. Sri G. Ashok Kumar, DG, NMCG, Minister of Jal Shakti, Government of India. Huge round of applause for him as well. I'll request both of our esteemed speakers to officially inaugurate the conference by lighting up the lamp. So if you can join us, please. Can we have a huge round of applause for the official inauguration of the Sustainable Urban Innovation Conclave Uttar Pradesh edition? The theme of the conference, as I have said, technology-enabled urban water energy transformation for a sustainable future. Just to give a brief about what APAC News Network stands for, APAC News Network is aggregating positivity for inspiring change. We bring communities together to create awareness on the importance of technology innovation for various sectors: governance, infrastructure, healthcare, education, manufacturing. And we're trying to bring communities together in India and abroad so that some meaningful dialogue can be taken. And event is not the end, it's a beginning. We document the outcomes of the event, sir. We share with stakeholders so that some action can be taken on the ground also. We'll also run a knowledge portal called apacnewsnetwork.com, where we are focusing on news and information related to technology innovation for various sectors, that
And we are thankful that two of the leading bureaucrats of the country who has guided us from the very first day 3 years back, both of them are here sitting together, Durga Shankar Mishra ji and G. Ashok Kumar sir. I'll talk about both of them later, but let me first invite Sri G. Ashok Kumar, IAS Director General, National Mission for Clean Ganga, Minister of Jal Shakti Government of India, to share his viewpoint on how urban water management can be a game-changing thing, especially when we talk about leveraging technology innovation. Just to give you a brief about G. Ashok Kumar sir, I think he's presently also holding charge of Ministry of Jal Shakti as Secretary. He is the actual rain man when you talk about bureaucracy, rain man. Over to C. G. Ashok Kumar. Give down class 5, please. Respected function, Mr. Sir, Chief Secretary of Uttar Pradesh, and more than a good friend and philosopher and guide for in bureaucrats like us, and all the delegates who are present here today. A warm welcome to all of you, and greetings on the occasion of the National Rivers Day. I hope many of you are aware that today is the National Rivers Day, so both are functions Delhi mein bhi hai. But since Sir said that I should come and say here, so I thank APAC also for organizing this function on this Rivers Day, because APAC had been doing a lot of work in the last 4-5 years. We together started the campaign Catch the Rain, and nobody was picking it up. They were the one who was with us, and then Catch the Rain campaign with the Honourable PM launched it, has become one of the biggest campaigns in the world. So all the team APAC also, I congratulate them for organizing this. After the tremendous success of the G20 event in Delhi and a lot of other events which have now pitchforked India to world stage, the world is looking towards India, and we have to respond. As Chief Secretary was telling, the event yesterday where they had the investors big meeting in Noida, a lot of things are happening, particularly in this state of UP, led by the CM and the Chief Secretary. Very proactively things are happening, and if UP takes off, that's where India's dream of $5 trillion economy is resting. So I'm sure that things will take off. But for this development which we plan, probably one of the key components is water. Water is the elephant in the room. Everybody talks about energy, everybody talks about that resources, this resources, but the limiting factor is going to be water. Let us understand that. And our Prime Minister very clearly understands this. And that's why he had been laying emphasis on water and water resources. This is the first time where he formulated a ministry, Jal Shakti, Ministry of Jal Shakti, bringing towards various departments handling water, then make a minister in charge for common decision. Because water has been divided in silos. People working in water sector work as a groundwater expert, or the surface water expert, river water expert, urban water expert, or rural water expert. The water is same, but then water is divided among these ministry silos of the departments, and then they don't meet each other. In Uttar Pradesh, it is in presence of CS, I would like to say there is a urban Jal Nigam and rural Jal Nigam. That is again a problem. So there are problems, interdepartmental problems many times creating gases in water. For that, Prime Minister started this Ministry of Jal Shakti, and after that things have picked up well. The Har Ghar Jal Yojana, where the plan to have connections to every rural also done very well. That, and then we had the Swachh Bharat mission, again dealing with the water quality aspect. So water is, as I said, going to be the limiting resource for the dream of the $5 trillion economy. And urbanization is very, very fast happening in this country. A lot of people from rural areas are moving to the urban area, so there are a lot of issues associated with urban sector. There is a transportation issue, there are issues related to roads, there are issues related to flyovers, there are issues housing. And again,
never been a part of the urban plannings. Most of the time, urban planners concentrate on transfer building rights, TDRs, or even the entertainment parks, probably, and probably looking at highways and roadways. But generally, many of the departments actually kept it as a separate department. And unfortunately, for the water, the resources are also not given because tax collections and the development rights all goes to the other municipalities, and the poor cousin, the water is actually left to fend for itself with low water pricing. There's hardly any revenue coming to the water department, and water actually is a big problem. I can tell you this in cases of Hyderabad. Hyderabad water supply used to be once in 3 days. Until 1983 was the last time when they had water supply in Hyderabad daily. And then in 2008, I happened to be at New that time, and the one of the pushed and said that we should have daily water supply. So that's the year of 1984. Last time daily water supply in Hyderabad. Then it took almost 24 years to get back daily water supply in Hyderabad. We wanted to do supply water daily, but then the problem is, as I said, we don't have resources to do it because we are not permitted to raise the water pricing. We are not permitted to actually look at various revenue generation mechanisms. We have to do water for the slum people. Demand is much more, and we have to bring water from far off areas. In Hyderabad, we have to bring water from Krishna about 110 kilometers away, and from Godavari 186 kilometers. The cost of pumping water, bringing from that area to the city is really enormous. But then we have to sell water at a very low price, and half the water is not metered. Many of you are aware of the concept of the non-revenue water. In India, the non-revenue water is as high as 40% in some places, whereas in cities or countries like Netherlands, they talk about 4 to 5% non-revenue. See the difference in problems. So we have large non-revenue water, we have very poor resource base, and then we are supposed to meet this particular resource for the people. Now that's where the technology comes in. The technology enabled urban water system comes in. This can be a very good enabler for at least fighting some of the big problems which the urban sector faces. Non-revenue water can be very much reduced if proper metering is done. If the leakages are avoided, leakage in the sense physical leakages. There are many areas where the pipe leakage happens and you pump out X quantity of water, and at the end we get X minus some Y quantity of water. And this Y can be reduced to zero if properly technologies are used to reduce to find the leakages and correct these immediately. Second, if the water metering is done at the source and at the reception point, and then compare where the water is lost, you can find out what's the fastest possible. And water metering, at least if you have a meter at the every taps or at every distribution points, we will know what exactly is the water we are using or pumping out. Now, this is a major problem in electricity also, where the AT&C losses are very high in many places because probably convenience of our staff, convenience of the governments, convenience of the industrialists, many of the losses which happens, which is accounted or which is attributed to poor people, are actually the chori which happens and given to the other big suppliers. So if we can use technology to meter the water, and if you can use technology to get the automatic reading coming up to you, to a large extent, at least we can account for it. The next step would be to try to plug the leakages. These are some of the innovations which we could do in Hyderabad long back. So this is definitely one important solution which we should push through. All the urban management people should actually take it up. As Secretary Urban Affairs, Sir, have taken up a lot of initiatives in water sector and other sectors as well. But then, if under his guidance, Uttar Pradesh can push forward for 100% metering of water, not charging. Charging is a political issue that can come later, but at least let us account for all the water, let us meter all the water coming. Let us all, in fact, take up the water, meter the groundwater also extraction, because as per records, India is the largest extractor of groundwater, much more than the
next second and third position countries, US and China. So we draw more groundwater, we use a lot of surface water, and our insatiable demand for water is ever growing. We should have something to do with improve the water use efficiency. Water use efficiency in agriculture is very bad. Again, for people in the water sector will know that 80 to 80, 85 to 90% of water usage in this country is in agriculture sector. So we talk about the urban water, drinking water management. That's a very important aspect. But again, I would say the elephant in the room in the water room is the agriculture sector. So unless you create better efficiency in water management in the irrigation sector, the overall water utilization will be increasing and the demand will keep on increasing. So to save water, we have to have proper metering, water monitoring, and better irrigation facilities. Coming to the urban sector management, we have to start reusing the water. Reusing water, at least on an experimental basis, we should stop usage of water in sectors like car washing or lawn irrigating the lawn, etc. We should try to ban use of potable water for all purposes. Let us try to think about it. Start thinking about it. If we can stop using this potable water being used for the non-potable purpose, that will be beginning of it. See that you sometimes, as a water man or water person associated with water, as a person responsible to bring water to Hyderabad from large areas, spending crores of rupees for electricity for pumping, crores of money for treating the water to bring that to the city, and you find that water which is supposed to be used for drinking purposes, we find people wasting it for washing the car, washing the garage, watering the lawn. It's a tremendous waste of money, and because not only that, it's a resource. Whereas this can be substituted by the water which is recycled from your sewage, or grey water can be purified and used. Again, the biggest another big problem which has come up in cities is the ROs. 50%. 10 minutes. 4 minutes. ROs waste a lot of water. Water which comes from the water source by the gel boats come to your home, and you take it to an RO. 50% of the water gets rejected, and what we throw is the water, we throw it out. We directly keep it in the sink and it goes down. If you are not able to do away with RO, at least use that water which comes out, reject water, for washing your vegetables, for mopping your floor, and then watering your plant. So one water can be used 3 times. So multiple use of water, reuse of water can be done. So we have high time we should start thinking water as a resource which will not keep on continuing flowing forever. So the campaign which we did, as I was mentioning earlier, the Cash Rain campaign was a very successful one. The cities get a lot of rainfall. Most of this rainfall are actually sometimes because the high intensity rainfall causing flood in the cities, causing damage in money. So it's high time we catch the rain, as the slogan goes, catch the rain when it falls, and ensure that the water is stored for the purpose for summer days. We also can, if you store the water, we can also address issues of urban flooding. So I am not getting into that discussion. So SCADA is another important innovation in the innovation the technology which we can use for monitoring the level of water in the supply reservoirs, and then use that SCADA to properly manage the distribution of water. In Hyderabad, when we started the daily water supply in 2008, one of the biggest components of success was the usage of SCADA, and that's the first time in a metro city we used SCADA. So SCADA and one control room to handle all the water issues can be great help in getting this water solution. So there are other important technology interventions like this remote meter reading, remote bulb meter readers, etc. that can help in monitoring the water. So I'm not getting to too many things. Now the last point I would say is in urban area, urban water bodies, water controlling organizations have less money. So if they can retreat the sewage
and the sewage water can be sold for industrial purposes. That can generate a lot of revenue. Surat municipality gets 140 crores by the sale of the treated sewage water. Let us think about how to use this treated water, STP's treated water, as a source of income for the people. Let me assure you, as long as urban cities are there, as long as people are living there, there will be sewage, and the sewage they'll pump it out of their houses. And the urban municipalities have responsibility to take care of sewage. If that responsibility is used as a source of income and generate good water out of it and use it as a revenue source, it will be great. So there are a lot of advantages. Gain from the sludge, we can generate power, we can generate lot of things with that. So, because of the shortage time, I stop here, sir. But I definitely will look forward for your guidance, and I'm sure that UP government, which is now going leap and bounds in development under his leadership and the leadership of his CM, will be a pathbreaker in many of these things. Thank you, sir. Thank you so much. I don't think I need to add anything on what Yashwant sir said, but I can only say that he's a person, as a policymaker, who really drinks and sleep water. He's passionate about water, and not many of you must be knowing. In the earliest stints when he was a district collector in the state of there's some lakes which have been named after him for his work in those districts for water conservation. And those lakes are still needed there. That has been a long journey 30 years back, and today he's again done that game-changing campaign called Caswin campaign, which has done a remarkable thing for water storage in India. We'll hear Chief Guest's address, but before that, I'll request Mr. Venkat Garivela, Vice President Sustainability, Schneider Electric India, to come on stage and give his presentation on how Schneider is helping governments in terms of effective water management technology innovation. Over to you, Venkat. Thank you, Shuvik, for the introduction. Good morning, everyone. Respected Chief Guest, Mr. Mishra, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Mr. Ashok Kumar, Director General, Clean Ganga Ministry of Jal Shakti, National Mission for Clean Ganga, Ministry of Jal Shakti. It was very inspiring to see how technology is going to be a key enabler for addressing the water issues. I'm not a water expert. I'm not coming from a water background. I'm coming from an energy background. But if you look at it, there is a very, very close nexus between energy and water. They are perhaps two sides of the same coin. So maybe if I give some insights, the way we at Schneider look at the energy landscape and hence the other associated infrastructure development requirements, maybe it will be interesting to have these discussions in those lines. If you see in the current situation, India is already the large economy, the fastest growing large economies in the world, and soon we're going to be a 5 trillion economy. And what essentially this will happen is the urban sprawls is going to be becoming bigger and bigger. Today we have about 34-35% of population in the urban areas. We're going to be seeing close to about 40% of our population in the urban areas. We're going to be adding, as per report, we're going to be adding about, let's say, 700 to 900 square meters of residential and commercial space, which is like adding a city of Chicago every year for next 10-12 years in this country. This is all coming our way, and we know the challenges of all the urban areas. I come from Bangalore, sir, and I know in Bangalore the distances are no more measured in kilometers, but in terms of time that we take, 7-8 kilometers, easily 45-50 minutes. And you know, many of you would know about, especially in the northern part of this country, the air quality index essentially is always very, very high. So here comes a huge amount of growth, development, urbanization in 10-15 years in this country, and then there are so many other constraints of resources also to manage. We are also trying to be energy independent country by, let's say, 2047, as we celebrate our 100 years of independence. And this is very, very crucial for
what this essentially means is that the energy consumption, especially the electricity consumption, is going to increase by 6 to 8 times by 2047. This is huge. We are already the third largest power consumer, power generating capacity in country, and it is going to further increase by such a big multiplier. Now, so urban development, energy growth, and then we have the agenda of meeting our climate goals in midterm, reducing the emission intensity of GDP by 45% 2030. This is part of Prime Minister made the announcement in Glasgow. And the second climate goal is net zero 2070. It is really far. So the way I see is we have to perhaps manage both the growth, development, improve growth, development, and ambition of this country, and at the same time, maximizing the available resources. By the way, the resources are a little bit constrained today in this country. 80% of the world's population living on only, let's say, 2.4% of the available land and has access to only 4% of drinking water. So this is where we are, right? On one side, inclusive growth, ambitious growth agenda. On the other side, we have resource constraints, and then both have to reconcile to see that we manage our climate goals in a very sustainable way. So this is the story for India, and why I'm saying this is I was very impressed by what Mr. Ashok Kumar said as to how technology can really bridge this whole gap of resources and fueling the growth ambition. And this is where a company like Schneider comes in. We at Schneider believe that sustainability and development can both exist, can both coexist. They need not be mutually exclusive. You don't have to sacrifice one for the other. Both can coexist, and that is the technology layer or the technology story that we are talking about. We have partnered with various government infrastructure development activities, whether it is transport infrastructure, airport infrastructure, water infrastructure. We have been participating exactly with the same philosophy of how do we make the growth, the development in a more sustainable way. 3 steps. I'll make it very short. The way we look at is, first is to make a sustainable growth model. The first equation, the first part of the equation, what we suggest is how do we optimize and save, whether it is water or, for that matter, whether it is for energy, right? And the best way of saving, optimizing, is by infusing digital technologies. Today we have a lot of digital technologies, right from the sensors all the way to making a digital twin and infusing AI and ML. Some of the demonstrations that we have on the other room are precisely talking about that. So whether it is energy, water, or any other important resources required for national development, how do we conserve, how do we very be mindful of what we are using and have the digital architecture to manage that. The second part of our technology approach, architecture approach, is especially in terms of electricity. How do we electrify more and more, right? Electricity is the only vector of energy which can be decarbonized on the demand side by optimizing, infusing digital technology, and also on the supply side by having more and more renewable. So electrification is a second big vector for us to have a sustainable development, more so in a country like India. And we are already seeing in our lifetime the transport sector moving on to the electrification, right? So these are 2 important enablers of saving and electrifying. And the third enabler and the last one is how do we replace our energy sources with non-fossil fuel with renewables. So this is the kind of approach that Schneider always has in making your industries, data centers, building, offices, infrastructure. This is the architecture that we propose, which will deliver extreme high level of efficiency and sustainability. So I rest my case. I'm very pleased and honored to be with you, sir. Looking forward for your guidance. I know there are important dignitaries in the audience also. Looking forward to meet you. And again, on behalf of Schneider Electric, I thank everyone for all the support. And
we are all here committed to bring best of the technology to this country and perhaps put the country on the roadmap of sustainable development. And I think, sir, India's growth model will be the real example of the global south to see how we manage sustainability and growth, which is what our global north perhaps couldn't do that well. So with that hope, I really thank all of you to be here and looking forward to interact more. Thank you very much. Thank you, Venkat from Schneider Electric, who is the sustainability head, vice president from Schneider Electric. As he has rightly pointed out, a very important aspect. We're all talking about growth, mitigating risk of climate change, but also ensuring the sustainable development, how we bridge those two things. And again, technology can be enabled in this. G. Ashok sir also spoke about that. We'll have chief guest address now, but before that, we have a surprise for both the chief guest and the keynote speaker, a small initiative from APAC News Network for both our esteemed guests who have joined us today. So I request Sangamitra Mohanty and Gopi Krishna Arora, co-founders of Gopi Krishna Arora and Sangamitra Mohanty, co-founders of APAC News Network, to come on stage. Sir, will be felicitating both of you for your exemplary work, to G. Ashok sir for his exemplary work in the water sector, and to Durga Shankar Mishra sir for his exemplary work over the years in the urban sector. So we'd like to felicitate Sri G. Ashok Kumar sir, recognizing his efforts in the water sector with a special award. Can we have the award and the shawl on stage, please? And can we have that video of G. Ashok Kumar sir on screen? And this special recognition goes to Sri Durga Shankar Mishra, Chief Secretary of Uttar Pradesh, for his exemplary work as a policymaker in the urban sector. This slide will tell you about that, about his work. It's our honor to recognize sir's effort in the urban sector. And we have the Can we have a huge round of applause for two leaders of India's public policies sector, if I say so, who have transformed to India leapfrog in last 10-15 years, one in water sector, one in the urban sector. And now I request Sri Durga Shankar Mishra, Chief Secretary of Uttar Pradesh, to come and deliver his special address. He doesn't need any introduction. Whatever urban transformation program you see in Government of India, he was the man behind that, who has not only planned and also implemented many of them, and also doing the same thing in the state of Uttar Pradesh. Over to you, sir. Huge round of applause for him. Sri G. Ashok Kumar, Director General, National Mission for Clean Ganga. Sri Venkat from Schneider, सभी गोस्वामी, अपाक के पीछे पूरा सारी की सारी ताकत के रूप में, और आज के इस
एक दिन के सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश में भाग ले रहे तमाम सारे हमारे सहयोगी अधिकारीगण, टेक्नोलॉजी से जुड़े बहुत सारे एक्सपर्ट्स और भी सम्मानित देवियों सज्जनों, मैं सामान्य तौर पे हिंदी में ही बोलता हूं, इसलिए मैं आज भी हिंदी में बोलूंगा। वैसे अपाक की मैगजीन अंग्रेजी में है तो आप उसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना संवाद हिंदी में ही रखता हूं, इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसलिए बोलता हूं कि मुझे बहुत गर्व है अपने मातृभाषा पे, और ये हमारी हम सबकी अपनी भाषा है जिसमें सब कोई, साधारण आदमी भी सब कोई समझ सकता है। देश के ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये हमारी बात पहुंच सकती है, तो इसलिए मुझे उस भाषा में बात करने में गर्व महसूस होता है। सबसे पहले तो मैं सौविक को और पूरे टीम को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन विषय पर आज की ये कार्यशाला रखने के लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा और उन्हें बधाई भी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोनों शब्द जो आपने चुना है, दोनों क्या, तीनों शब्द, सस्टेनेबल भी, अर्बन भी और इनोवेशन भी, ये तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले तो अर्बन को लेता हूं। अर्बन, आपको मालूम है 2022 में हमारे देश की शहरी आबादी 50 करोड़ क्रॉस कर गई। लगभग 36% आबादी हमारे देश की शहरी इलाके में रहती है, और ये आबादी 2031 तक 60 करोड़ का फिगर क्रॉस कर जाएगी। और जो अनुमान है उसके मुताबिक 2051 तक जो हमारी जनगणना होगी तो ये आबादी हमारी 88 करोड़ को क्रॉस करेगी, और हम लोग मेजरली एक अर्बन पॉपुलेशन की कंट्री हो जाएंगे। हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि हिंदुस्तान की 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र को कम महत्व है। अर्बन एरिया जो है, दे आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारे देश को तेजी से विकास करना है, अगर देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ना है, तो अर्बनाइजेशन, जो दुनिया का एक्सपीरियंस कहता है कि अर्बनाइजेशन मस्ट है, उसके बगैर विकास तेजी से नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अर्बन एंड रूरल दोनों एक दूसरे पे संपूरक है, दोनों एक दूसरे को सर्विस करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रूरल एरिया का जो प्रोडक्शन है वो अर्बन एरिया में जाकर के वो एक नया उसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन होता है, और इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन के फुल रूरल एरिया को सर्व करता है। और ये दुनिया की ये अनुभव कहता है कि रूरल एरिया में धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होता है, अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वहां पे एक सिनर्जी बनती है। जो तमाम सारे फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं वो सारे एक साथ एकत्रित होते हैं, और उसके नाते बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा किसी जमाने में हम लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा करते थे कि 2% का ग्रोथ होता है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 8% से ज्यादा की ग्रोथ कर रही है। उन तमाम सारी वैश्विक महामारी की चुनौतियों के बावजूद हमारे देश की अर्थव्यवस्था 8% ज्यादा ग्रोथ कर रही है, और ये 10% से और ज्यादा ग्रो करेगी। जैसे जैसे इसमें ये ग्रोथ होता है उससे और ज्यादा ग्रो करेगी। लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन आवश्यक है, वो देयर इज नो फ्री लंच। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो के लिए जो हमारी शहरी, जिस प्रकार से शहरों का तेजी से विकास होता है, आज लगभग 5000 शहर हैं पूरे देश में। हमारे प्रदेश में 762 शहर हैं। हमारे प्रदेश का बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन अर्बनाइजेशन के साथ साथ नए नए चैलेंजेस आते हैं। जो लोग अपनी, चाहे वो शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, व्यवसाय के बारे में एक नई व्यवस्था को अपनाने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें तमाम सारी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। वो चुनौतियां होती हैं सामान्य अवस्थापना सुविधाएं, चाहे पीने का पानी हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसकी एंटरटेनमेंट की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की, उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, हर एक जगह उसको चुनौतियां झेलनी पड़ती है।
और सबसे बड़ा उसको आवास की व्यवस्था, वो और भी बड़ी उसको चुनौती होती है। आप सोचिए, दिल्ली में एक तरफ कोई रहता है और दिल्ली के दूसरे तो वो काम करने जाता है, पूरा का पूरा सिटी कंजेस्ट कर जाता है। आज अगर दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा का डीएमआरसी का नेटवर्क नहीं होता तो सोच के एक बार देखिए, सिहरन हो जाती है। दिल्ली में लोग मूव नहीं कर सकते। इसलिए इन चुनौतियों से जूझने के लिए हमें नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, और वो तरीका पिछले 10 साल में बहुत अच्छे से ढूंढा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक राह दिखाया स्मार्ट सिटी का। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तब हमें समझ में भी नहीं आ रही थी कि आखिर स्मार्ट सिटी होता क्या है, क्योंकि मैं उस समय उसी मंत्रालय में था। मैं एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था अर्बन मंत्रालय में। हमें समझ में नहीं आता था कि स्मार्ट सिटी क्या होता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हमारे देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है। लेकिन जो उसके बाद हमारी लर्निंग हुई और वो जो यात्रा चली, आज हमारा देश स्मार्ट सिटी में के माध्यम से मिशन टू मूवमेंट, हम हर शहर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। और स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को जब लॉन्च किया था स्मार्ट सिटी मिशन विज्ञान भवन से, तो उन्होंने 1-2-3 शब्दों में कहा था, स्मार्टनेस क्या है? गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। जो अभी वेंकट बात कर रहे थे, आप तो इलेक्ट्रिसिटी, आप पावर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सारे सेक्टर्स के बारे में बात करता हूं। पावर ही नहीं, पावर भी हो सकता है। हमारे अशोक जी अभी पानी वाटर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, कोई हो सकता है इंटरटेनमेंट की बात करे, कोई हेल्थ की बात करे, कोई शिक्षा की बात करे, कोई ट्रांसपोर्ट की बात करे। हर एक सेक्टर में गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कुछ संभव नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक टेक्नोलॉजी का ऐसा लेयर हो जिसके उससे आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ये हमारी स्मार्ट सिटीज की लर्निंग है। कैसे हम जितना है उससे अधिक से अधिक लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हमारी लर्निंग है। कोविड का जो चैलेंज था, कोविड के दौरान कैसे हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से अपने हाइजीन के बारे में, वाटर के बारे में, सीवर के बारे में, हर चीज को हम कैसे मैनेज कर पा रहे थे। बैठे बैठे एक स्क्रीन के ऊपर हम सारी की सारी व्यवस्था शहर को देख सकते थे। इनफैक्ट मैंने, जब मैं वहां पे अर्बन एंड हाउसिंग का सेक्रेटरी था, मैंने कहा हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है ये शहर का नर्व्स एंड ब्रेन है। सिस्टम्स उसको चीजों को कैप्चर करता है और उसका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और सही जगह उसका उपयोग करता है। ये हमारा स्मार्टनेस है, और स्मार्टनेस मतलब सस्टेनेबिलिटी। लेकिन कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मार्टनेस का मतलब है केवल सस्टेनेबिलिटी का मतलब टेक्नोलॉजी। ये बहुत लोगों को दूर भी कर देता है। कई बार ऐसा, जब बहुत ज्यादा हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि केवल टेक्नोलॉजी है, इसमें केवल, अगर जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक सिस्टम स्मार्ट नहीं बनेगा, तब तक सिस्टम सस्टेनेबल नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं। जो मेरी लर्निंग हुई स्मार्ट सिटी को रन करने में, या पूरी की पूरी जो अर्बन के तमाम सारे मिशन, नेशनल मिशन में चलाने हुए जो मेरी लर्निंग हुई, वो लर्निंग थी, और ये हमने माननीय प्रधानमंत्री से सीखा। तो आज हम उत्तर प्रदेश में इसको बहुत तेजी से लागू कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरत है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी। लेट मी पुट इट अदरवाइज, उसको उल्टा में लेके चलता हूं। सबसे पहले सोशल सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है कि जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट लोग उसको ओन करें, लोग उसके साथ जुड़े। नहीं तो हमारे यहाँ जो वाटर के प्रोजेक्ट होते थे, मैं पहले उत्तर प्रदेश में मैं प्रमुख सचिव नगर विकास हुआ करता था। जब जेएनयूआरएम का प्रोग्राम चलता था, उस प्रोग्राम को मैं बहुत, उत्तर प्रदेश उस जमाने में जब मैं प्रमुख सचिव नगर विकास होता था, जब जाते थे भारत सरकार का जो अर्बन मिनिस्ट्री में जाते थे और वहां पे चीज सेक्शन करके आते थे, लगता था यूपी बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो हमें लगता है कि जेएनयूआरएम में हम जो काम करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर करते थे, पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं हम, उसको पानी के कनेक्शंस दे रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें हम उसको केवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगते थे। लेकिन अब हमें जब अमृत 2.0 आया तो हमारा जो है फोकस बिल्कुल बदल गया। एक सस्टेनेबल शहर बनाने की बात हो गई
कि पानी हमारे लिए केवल वो पाइपलाइन नहीं है, पानी हमारे लिए केवल वो बड़े बड़े हमारे टैंकर्स नहीं है, अंडरग्राउंड टैंकर्स नहीं है, वो हमारा जो राइजिंग मैन नहीं है। पानी हमारे हर घर को शुद्ध पानी पहुंचाना है, और शुद्ध पानी ऐसा पहुंचाना है जो ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7, जिससे कम से कम पानी में हम अधिक से अधिक लोगों की सर्विस कर सकें। तो हमारा फोकस आउटकम हो गया कि कैसे लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य पानी के माध्यम से हम दे सकते हैं। ये हमारा फोकस सस्टेनेबिलिटी हो गया। मेकिंग द सिटी सस्टेनेबल, क्योंकि बहुत सारे शहर पानी के बगैर मर गए। अभी अशोक जी ने बात की, जो इंटरनेशनल रिवर डे की बात की, जो कि चौथा 2005 में शुरू किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, 2005 में शुरू किया गया, और हमारा हर साल के सितंबर का अंतिम जो रविवार होता है वो वर्ल्ड रिवर डे होता है। और इसको हमारा प्रदेश से ज्यादा कौन जानेगा। हमारा प्रदेश में तो, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नदियों का जाल बिछा हुआ है, और वो सारी की सारी पेरिनियल रिवर्स हैं। बहुत सारे जगह तो नदियां हैं लेकिन पेरिनियल नहीं। हमारे यहाँ तो नदियों का जाल वो हिमालय पर्वत से निकलने वाले नदियां हैं, जो कि हमेशा 12 महीने वहां पे पानी रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी पानी बहुत सारी नदियों से खत्म हो गया। बहुत सारी नदियां हमारी मर गई। नदियां क्यों मरी? क्योंकि लोग नदियों से दूर हो गए। नदियों में लोग कूड़ा फेंकना चालू कर दिया। नदियों को जो सस्टेन करने की जरूरत थी, तो नदी तो हमारे लाइफ लाइन है। हमारी खेती हो, चाहे हमारे लोगों को पीने का पानी हो, हमारे खेत के लिए हो, कल कारखाने के लिए, उससे पानी की बहुत आवश्यकता है। लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होती गई। बहुत सारी नदियां मर गई। लेकिन खुशी की बात है कि आज नदियां फिर से जीवित हो गई। नदियां आज बहुत तेजी से, उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा नई नदियां जो है, जो खत्म हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, उनके बारे में कहानियां पढ़ते थे, उसके बारे में लोरी पढ़ते थे, लेकिन आज वो नदियां फिर से जीवंत हो चुकी है। इसके बारे में एक उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक हापुड़ जनपद के नीम नदी की बात की थी। कैसे वो नदी खत्म हो गई थी, और लोगों ने, पब्लिक ने मिलकर के, चाहे मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से हो, उसमें हमारा फाइनेंशियल 15th फाइनेंस कमीशन या हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हो, लोगों के श्रमदान के माध्यम से हो, आज वो नदी में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारी नदियां हमारे बुंदेलखंड में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां, 50 से ज्यादा नदियां हमारी वापस फिर से वो जीवंत हो चुकी है। और लोग जब उसके साथ जुड़ गए, जब लोग जुड़ गए, तो नदियों में पानी हमेशा बना रहेगा। तो समय के साथ जब हम लोग भूल जाते हैं, जब लोगों को दूर कर देते, तो चीजें खत्म हो जाती है। ऐसे हमारे तमाम सारे पोखरे, तमाम सारे हमारे तालाब मर चुके थे। मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव का पोखरा, जिसमें मैं बचपन में स्नान किया करता था, जाकर के वहां हम लोग तैरा करते थे। हम जाके वहां से मिट्टी, उसकी बने पोखरे की मिट्टी उठा निकाल के लाते थे, खिलौने बनाने के लिए लाते थे। इतनी बढ़िया मिट्टी हुआ करती थी। वो पोखरा खत्म हो गया था। जब बारिश होती थी तो थोड़ा मोड़ा पानी आता था। आज मेरे गांव के पोखरे में आज वो अमृत सरोवर है। हमारे गांव के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे बना हुआ एक अमृत सरोवर, उसके पास में एक अमृत वन बना हुआ है, और वहां लोग दोबारा फिर से स्नान करते, उसे घाट बन गया। वहां लोग पूजा पाठ करना चालू किए। वो फिर से जीवंत हो चुका, वो सस्टेनेबल हो चुका, क्योंकि लोगों के साथ हमने उसको जोड़ दिया। जब तक हम लोगों के साथ नहीं जोड़ेंगे, सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। और ये हमारी लर्निंग है स्मार्ट सिटी में नहीं, बल्कि हर एक नेशनल अर्बन मिशन जितने हमने चलाया, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन, आज स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है, जो स्वच्छता के बारे में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण, कैसे हर कोई उसके साथ जुड़ गया। स्वच्छता केवल ये टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल सफाई करना, झाड़ू लगाना सफाई नहीं है केवल स्वच्छता, बल्कि स्वच्छता बिहेवियरल चेंज है। और बिहेवियरल चेंज तब होगा जब लोग उसके साथ जुड़ेंगे। तो पूरा का पूरा कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के साथ जोड़ने का। जो हमारे अमृत का प्रोग्राम था, अमृत के प्रोग्राम में लोगों के जोड़ने की आपकी क्या जरूरत है। केवल हमें पाइपलाइन नहीं लगाना, बल्कि पाइपलाइन के साथ आवश्यक इंश्योर करना है कि लोगों को पानी पहुंचे, लोग उसको शुद्ध पानी का उसको भाव लें, और उस पानी को लोग नुकसान न करें। जो हमारा पानी, जो सस्टेनेबिलिटी का जो सबसे बड़ा मंत्र है, वो मंत्र है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। कैसे हम अपने जो हम अपने जितना सारा प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि नेचर हैज गिवन अस एनफ टू सर्व आवर नीड बट नॉट आवर ग्रीड। जो हमारी जरूरत है, हमारे कबीर दास ने क्या कहा है, साईं इतना दीजिए
जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी ये हमारी संस्कृति है, हमारे बहुत सारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं कि भगवान मुझे उतना दो जो हमारी आवश्यकता है, और मैं इस नेचर को हमारे वैदिक मंत्र में, ऋचाओं में हम इसको जो लेकर के अपने नेचर को सस्टेनेबल बनाने के लिए, जिससे कि हर जीव जंतु जितने भी सारी इस प्रकृति के भाग हैं सब एक साथ सस्टेनेबल चल सके। तो सबसे पहला आवश्यक हमारा सस्टेनेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी के भले लोगों का उसके साथ जुड़ाव। हर कार्यक्रम के साथ जब तक लोगों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक हम स्लम्स में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे। आज देश में करोड़ों मकान बन गए स्लम्स के बारे में, लोगों के घर घर में शौचालय बन गए। देखिए कि कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया। तो जब तक सब लोगों को हम लोग एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अंतिम आदमी तक, हर आदमी के भाव को नहीं सोचेंगे, तब तक हम डेवलपमेंट अपना सस्टेनेबल नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि जितना हम लोग रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, जो हमारी थोक करने की आदत पड़ गई है, एक फिजिकल वर्ल्ड में जो इस प्रकार के हमारे परिवर्तन आ गए, जो हम बहुत सारी चीजें सिस्टम को पोल्यूट करते हैं। आज हमारे देश ने एक चैलेंज दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य लेकर के चला कि 2070 तक हम इसको कार्बन फुटप्रिंट अपनी जीरो कर देंगे। कार्बन फुटप्रिंट जीरो कौन करेगा? हम लोग सब सारे के सारे मिलकर के करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक आह्वान किया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। इनफैक्ट हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी ही थी। हमारे देश में हमारे लोगों की लाइफ स्टाइल, आप सोचिए, पहले आप एक यूज करता था, फिर दूसरा यूज करता था, फिर तीसरा तीसरे रूप में यूज करता था। उसी चीज को हम कैसे कैसे उसका उपयोग उस अंत तक, और फिर बाद में फिर से वो साइकिल हो गया। यही नेचर का नेचर है, चीजों को साइक्लिक रूप में चलना, उसको एक चक्रानुक्रम में चलते रहना। तो वो हमारे लिए आवश्यक है कि हम कैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करें। और तीसरा जो लेयर है वो है टेक्नोलॉजी का। कैसे नवाचार, कैसे हम नए नए किस्म के टेक्नोलॉजिकल नए प्रोसेसेस, नई व्यवस्थाएं हम ऐसे कैसे क्रिएट करें, जिसकी बात एक उसका चर्चा जो वेंकट ने किया, उसके बारे में अशोक ने भी बात की। आज हमारे देश में नवाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यंग बच्चे, जब मैं आईआईटी में पढ़ता था तो हम लोग आईआईटी में पढ़ करके बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते थे। आज आईआईटी के पढ़े हुए बच्चे जो है नए नए इनोवेशन, नए नए स्टार्टअप्स, नई चीजें जो हमारी कैसे हमारी जरूरतों को, ह्यूमन नीड्स, मेकिंग लाइफ इजियर, मेकिंग ह्यूमन लाइफ इजियर, मेकिंग बिजनेस प्रोसेस इजियर, उसको करने में जुड़ जाते हैं। और उसमें दे सी देयर बिजनेस, दे सी देयर इकोनॉमिक सेंस, दे सी देयर फ्यूचर। आज इतनी सारी नई नई चीजें भी बाहर वहां पे दिखाई जा रही थी। स्नाइडर का दिखाया, और भी लोगों का मैंने वहां पे देखा, बाहर देखा। इतनी सारी नई नई चीजें हो गई हैं, और हर चीज के पीछे एक ही उद्देश्य कि कैसे ह्यूमन लाइफ को आसान किया जाए। और ह्यूमन लाइफ को आसान करने में दैट बिकम्स योर इकोनॉमिक एंटिटी, वो आपका बिजनेस बन जाता है। जो हमारा स्वच्छता का जो हमारा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन, ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारा जो अमृत का जो वाटर के बारे में, जल जीवन मिशन का, इसका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इसका एक मेजर कंपोनेंट है। और वो इनोवेशन किस बात के लिए? वो इनोवेशन इस बात के लिए कि कैसे हम कॉस्ट को कम करेंगे, ताकि अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करेंगे, ताकि हम इंक्लूसिविटी इसको बेहतर करेंगे, जिससे कि हम इसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि हम लास्ट पॉइंट तक इसको जो सर्कुलर यूज करके, जो आपने एक एग्जांपल दिया, जो चेन्नई के बारे में एक एग्जांपल दिया, सूरत के बारे में आपने एग्जांपल दिया, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एज अर्बन सेक्रेटरी में देखा करता था इसको जो है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। और वही नहीं, आज हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश में काफी बड़ी मात्रा में हमारा वाटर रीयूज हो रहा है। बहुत सारे जगह, न केवल आप, पहले तो हमारे दिमाग में आता था कहाँ यूज करते, केवल हॉर्टिकल्चर में, नहीं, आज हॉर्टिकल्चर में यूज हो रहा है, हमारा कल कारखानों में यूज हो रहा है, हमारा पानी का उपयोग हो रहा है, हमारा अब इसमें पावर सेक्टर में इसका पानी का उपयोग हो रहा है, रोड सेक्टर में इसका पानी का उपयोग हो रहा है, बहुत सारी जगह उसका उपयोग हो रहा है, ताकि उतने से हम फ्रेश वाटर को कम कर रहे हैं, उसका उपयोग हम कम कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इज not only technology, let's not confuse. Technology is only an enabler. Technology is only an enabler. Technology helps in optimization,
but sustainability requires to change our habits. जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी इज बिल्डिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल. लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस बिल्ड करना, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. और ये सब कुछ चीजें आज हमारे देश में बहुत तेजी से हो रहा है. जो लोगों का जिस प्रकार से बिहेवियरल चेंज हो रहा है, वो बहुत परिवर्तन हो रहा है. इनफैक्ट जो आपके हाउसिंग सेक्टर में कमाल का चेंज हुआ है. हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया था, और इतने किस्म किस्म के हाउसिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं कि कैसे आप क्या करें कि हीट इंपैक्ट कम हो, क्या करें कि कोल्ड इंपैक्ट कम हो, क्या बने, ऑल दीज आर फॉर सस्टेनेबिलिटी. क्या करें कि हमारी उसकी जो लाइफ बढ़ जाए. जब लाइफ बढ़ेगी तो उतने हम कम से कम उसको जो हमारा उतना कम डिप्लीशन होगा, रिसोर्स का डिप्लीशन होगा. इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं. और भारतीय मनीषा, मुझे जैसा लगता है कि वो हमारी जो पुरानी प्राचीन वैदिक मनीषा हुआ करती थी, सारे हमारे जो ऋषि मुनि जो सोच करके इतनी सारी चीजें किया करते, एक बार दोबारा हिंदुस्तान जग चुका है. हिंदुस्तान जग रहा है और बहुत तेजी से. और वही हमारी जो आज जो हिंदुस्तान में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश को 2047 तक विकसित देश बनाएंगे, ये अमृत काल, एक गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें हम इसको लेकर के चलेंगे. या हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं हमें कि इसको जो है एक लक्ष्य देके रखा कि हमसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे. हम हर सेक्टर को ग्रो करेंगे, और जब सेक्टर को ग्रो करेंगे, ग्रोथ विद एनवायरनमेंट, ग्रोथ विच इज सस्टेनेबल, ग्रोथ विच इज लॉन्ग टर्म, विच विल बी विद द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सारे के सारे लोगों को साथ जोड़ करके, तब वो जो ग्रोथ होगा वो ऐसा ग्रोथ है जो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, शाश्वत ग्रोथ होगा. और यही मैं समझता हूं कि आपका जो सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन का जो आपका जो ये कॉन्क्लेव है, मैं समझता हूं कि आज पूरे दिन भर के डिस्कशन में ऐसी बहुत सारी बातें निकलेंगी जो उपयोगी होंगी प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो उपयोगी होंगी टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए. उनको इंसाइट मिलेगी कि हम क्या करें, टेक्नोलॉजी का करें कि जिससे कि माध्यम से हम लोगों को इसके साथ जोड़ सके, जिससे कि हम वो जो हमारा लक्ष्य है बाई 2070 जीरो कार्बन इम्प्रिंट, हम उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सके. मैं स्वामी गोस्वामी जी को और आपकी सारी टीम को एक बार दोबारा धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं एक अच्छे विषय पर आपको कार्यशाला करने के लिए. और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि पूरे दिन भर का डिस्कशन एक एंगेजिंग डिस्कशन होगा, एक फ्रूटफुल डिस्कशन होगा. कुछ ऐसी नई चीजें निकल करके आएंगी जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी, आगे के लिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होंगी. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir. I don't think I need to add anything because sir has extensively spoken about the importance of sustainable development. And when you talk about sustainable development, it's not about technology, but ensuring economical, environmental, and social development, and people at the core of that development. That inclusive growth has to happen with people at the center, and technology can be used as an enabler. And he has also stated how India has transformed in the last 8-10 years with the policy formulation and implementation of those policy on ground. Again, where people is at the core. As Ashok ji always tell that, quoting Honorable Prime Minister, the water revolution happening in the last 8-10 years has been successful because, as PM has said, that we have to make the Jal Andolan Jan Andolan. And as Durga Shanga ji also said that rivers will die if we stop ensuring connection of people with river. Bring people closer to river, river will never die. Thank you so much all of you for joining us. A small thing we have to do before we end the inaugural session. I request Sangamita Mohan to come on stage. I request Durga Shankar ji, if you can kindly hand over a speaker memento to our industry speaker, Mr. Venkat Garimela from Schneider Electric India.
Sir, just a last thing, sir. We also thought of recognizing the efforts of Uttar Pradesh Urban Development Department. We actually invited Amrit Abhijat, sir, but he had to leave for Delhi today morning. So we thought also honor his recognition. So I think Mr. Amit Kumar Singh is here from the department, Special Secretary. He can receive the award on his behalf from you, sir. So can we have the shawl and the memento of Amrit Abhijat, sir? बस यही सर yes sir. Amit Kumar Singh, if you can come on stage, please. As a special recognition to Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, whose Principal Secretary is Amrit Abhijat, sir, is not here, so Amit Kumar Singh is receiving that award on his behalf. Thank you so much. That brings us to the end of the inaugural session. We'll break for a short. We'll have a short tea break and then we have a special presentation by Mr. Ranjan Kumar and Mr. Ranveer Prasad. So please join us after 10 minutes.